अगर हम बिजनेस की बात करें तो 1 लाख करोड़ जो है पार कर चुका है। अगर हम हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 21,000 करोड़। एसएमई पोर्टफोलियो हो, एडवांसेस हो, डिपॉजिट्स हो, हमें सब में शानदार नंबर दिख रहे हैं। ये किन फैक्टर्स ने इनको ड्राइव किया? Even in a difficult environment, our CASA remained 39%. That is also contributed to reducing the cost of resources. And on the asset side, if you see the growth rate has come from across the business segments, whether it's corporate, whether it is retail, agriculture, MSME. Offside, there has been a special dividend which SBI MF has paid, but that's 2,200. When you compare 4,500 what we had in the previous quarter, even if you adjust to that, I think the operating income has shown a good growth, even if without considering the one-off. और सर आपने यहाँ क्रेडिट ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो डबल डिजिट कर दी है। क्या इसके पीछे सर ये ट्रेड डील्स जो हुई हैं खास करके यूके के साथ और यूएस के साथ, इसको देखते हुए आपने गाइडेंस रिवाइज की है? The guidance which I revised is for the current quarter, 13 to 15% from the 12 to 14%. But this is not purely based on the trade deals. Obviously, trade deal benefit will be available to us because it improves the confidence of the people to invest in their ventures. Going forward, next financial year, we will have full benefit of the trade deals. But what our guidance is based on the benefits which are accrued on account of GST rationalization and the consumption demand which has been pushed by the income tax benefit which people have got. This is based on this, and obviously, trade deals are going to add some more weight to our advisory. और सर कहाँ से आप डिमांड ज़्यादा आती देख सकते हैं, कौन से सेक्टर से? ये सब सेक्टर्स में डिमांड आ रहा है। मेजर डिमांड रैम सेगमेंट में है। रैम मीन्स रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME सेगमेंट। MSME सेगमेंट 20% से ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखा रहा है। बट इस बार Q3 में हमने कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी देखा। कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ इज़ अ फंक्शन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंजम्पशन, ब्रॉडर कंजम्पशन economy. I saw that the consumption is driving better utilization of working capital limits. वो भी एक corporate credit growth का reason है. And मेरे ख्याल से जो trade tariff का जो overhang था US tariff का, वो बड़ा relief मिल गया है trade deal से. ये overhang निकलने से I think investment sentiment, investment climate improve हो जाएगा. और सर हमने क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस तो रिवाइज की, लेकिन अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें, ये सभी बैंक्स के लिए चैलेंज है और आपने बोला भी एक तरह से स्ट्रक्चरली बैलेंस शीट रिविजिट करने की ज़रूरत है। नहीं, पहली बात ये है कि जो हमने स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, दैट मे नॉट बी द केस विद SBI. SBI स्टिल इज़ वेल पोजिशन। हमारा ब्रांच नेटवर्क है और इफ़ यू हैव सीन रिटेल टर्म डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 14%. while we still are maintaining CASA at 39%, which is a good combination. You have a sticky retail deposits, you have a sticky savings bank, and growth in double-digit growth in current account. But the industry has to be prepared for that. I said, जैसा भी वो financialization के beyond में, how households are structuring their savings. They are putting in bank deposit, they will put in insurance, they will buy pension schemes, and they will also buy mutual funds. So somewhere this money which is going into these sectors have to come back to the real economy. It will come back. So which means that the banks have to be ready to access that money which is coming into the market. This is what my idea of saying that structurally there will be some shift. We have to be prepared for that. Whether it will happen next quarter, next year, that is not the issue. Issue is that whether banking sector is it thinking in that direction? The way the policy makers are thinking in that direction is a moot point. तो सर SBI ने उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया है? So SBI के लिए अभी जो immediate concern नहीं है, because our deposit growth rate is sufficient for us to support the credit growth rate. When we have an adequate liquidity, we have adequate capital buffers. But ideally, I think every bank, including SBI, has to be prepared for that shift. और सर आपने बात की कि क्रेडिट ग्रोथ जो है MSME उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और हमने कल RBI की पॉलिसी में ये अनाउंसमेंट भी देखी कि कोलैटरल फ्री लोन्स जो हैं अब उनके लिए लिमिट उसकी बढ़ गई है। तो इसको आप किस तरह से डिमांड को पुश कर होते हुए देख सकते हैं और अपनी बुक्स के लिए इसको किस तरह से देखते हैं?
MSME I think it's a good move. 10 lakhs was the earlier limit, and of course it's been there for quite some time, so they had to revise to 20 lakhs. While it will give confidence that regulatory wise these limits are acceptable even if it is given on unsecured basis. Most of us also are pursuing CGT MSE backed loans which do not call for any collateral. We are seeing quite a good growth on the CGT MSE guaranteed loans. So it's a combination of the regulatory nudge in terms of going up to 20 lakhs, and also that our own underwriting process is much more robust now to depending on the guarantee and extending the loans to MSMEs. और सर साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी अनाउंस किया कि आपका साथ अगर कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा, 15% लॉस बैंकिंग करेगा, 15% ग्राहक, और आरबीआई भी अपनी इनकम से देगा. तो आप इस मूव को कैसे देखते हैं और आपकी इसमें बुक्स में आप इसमें क्या असर होते हुए देखते हैं? क्या कुछ कहीं ना कहीं मार्जिन्स में इसमें कमी आ सकती है इस वजह से, या इस एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं? एक्सपेंसेस मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. आई थिंक ये जरूरी है कि आरबीआई का इंटेंशन क्या है. इट्स नॉट अबाउट कंपनसेशन अलोन. आई थिंक कंपनसेशन कॉस्ट के बियॉन्ड हमको देखना चाहिए. दिस इज हाईलाइटिंग दैट कस्टमर हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड. एसबीआई ने लगभग 300 लोग प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, एंड एक सेंट्रलाइज साइबर सेल हमने क्रिएट किया है पटना में. वहाँ पे भी लगभग 100 लोग काम करते हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ काम करते हैं. जैसा भी लॉस हो जाता है, हाउ डू वी प्रोटेक्ट द कस्टमर, हाउ डू वी रिस्टोर द मनी टू हिम. सो आई थिंक द होल सिस्टम विल वर्क टुवर्ड्स ensuring that the customer is protected. और सर साथ ही साथ यहाँ पर मिस सेलिंग को लेकर भी गाइडलाइंस आने की बात है, तो क्या बैंक्स के लिए अब ये ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टारगेट्स हैं, जिनको टारगेट्स मीट करने होते हैं, उनके लिए प्रेशर बढ़ता है जिस वजह से मिस सेलिंग बढ़ती है? The mis-selling or selling third-party products. Mis-selling is a separate item. Selling third-party products, there were different circulars. I think RBI will be consolidating them. Will also be guiding how this business has to be conducted. While the broad guidelines are already there, I think there will be a much more consolidated guidelines will be coming. But let me also tell you that from SBI point of view, we are extremely cautious in terms of selling what is the right product to the consumer. And that has always ensured that we hardly have any mis-selling complaints. So this obviously will give a framework for all the players to ensure that how third-party products are sold.